नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे जो है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, एपीएच क्या होता है, अब्रप्शो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एपीएच की डेफिनेशन देखते हैं। एपीएच क्या होता है। एपीएच इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक। जो हमारा जेनाइटल ट्रैक है उसके अंदर ब्लीडिंग आना कब, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 28 वीक्स अप टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो 28 वीक्स से लेकर के जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता उसके अंदर अगर ब्लीडिंग आ रही है तो दैट में लीड टू एपीएच। बट इन सम क्लिनिकल गाइडलाइंस में ऐसा लिखा हुआ है कि 24 वीक्स के बाद भी अगर ब्लीडिंग होती है तो वो एपीएच के अंदर आता है। बट जो हमारा क्लासिकल टीचिंग माइलस्टोन है वो है 28 वीक्स। अब उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की हम बात करते हैं। वो है हमारे मेनली 3 कॉजेज होते हैं। प्लेसेंटल कॉज हो सकता है, फीटल कॉज एंड लोकल कॉज। प्लेसेंटल कॉज में मोस्ट कॉमन हमारा क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसके अलावा हमारा होता है सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। फीटल कॉज के अंदर हम बात करेंगे वैसा प्रीविया या फिर रप्चर ऑफ फीटल वेसल्स। लोकल कॉजेस कोई भी हो सकते हैं, सर्वाइकल पॉलिप्स, सर्वाइकल इरोजन्स, ट्रॉमा, कार्सिनोजन्स या फिर एनी एमर्जेंसीज सिंड्रोम, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें मेनली 2 चीज़ के बारे में बात करेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो पहला हम देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मेनली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया होता है, प्लेसेंटा होता है, वो अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर आकर के अटैच होता है। बट इन प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और होली इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर के वो अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सर्वाइकल ऑरिफिस है, सर्विक्स है, उसमें क्या होगा कि क्लोज हो जाएगी, उसकी ओपनिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो प्लेसेंटा प्रीविया अकर्स व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और होली इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस एंड द लोअर segment stretches, the attachment is disrupted leading to maternal hemorrhage। इसमें डिग्री ऑफ सीवियरिटी क्या क्या हो सकती हैं, 4 तरह की हमारी 4 टाइप्स हैं। फॉर टाइप 1 लो लाइन, टाइप 2 मार्जिनल, टाइप 3 इनकम्प्लीट, टाइप 4 कंप्लीट। लो लाइन क्या होता है, एजेस रिचेज द लोअर सेगमेंट बट नॉट द ओएस ऑरिफिस। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे मार्जिन है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को टच करेंगे, बट इसमें क्या होगी, जो हमारी ऑरिफिस है वो क्लोज नहीं होगी। टाइप 2 सेगमेंट में क्या होगा, मार्जिनल, एजेस रीचेज द इंटरनल ओएस बट डज नॉट कवर इट। तो इंटरनल ओएस पे जाकर के वो एजेस अटैच हो जाएंगे बट कवर नहीं करेंगे। टाइप 3 इनकम्प्लीट, टाइप 4 कंप्लीट। इनकम्प्लीट एज द नेम सजेस्ट कवर्स द ओएस पार्शियली व्हेन क्लोज्ड। एंड टाइप 4 कंप्लीट हो जाएगा, ओएस जो होगा हमारा सर्वाइकल ओएस वो कंप्लीटली क्या होगा, कवर हो जाएगा। Now come to discuss about risk factors of placenta previa. First होता है multiparity. In the case of multipara increase risk with a higher number of pregnancies. Second one is maternal age. Women whose age is more than 35 years of age may have a greater chances of placenta previa. Third one is prior surgery. History of C-section, cesarean section or dilatation and curettage method. Placental abnormalities, any kind of placental abnormalities, large placenta, circumvallate placenta, succinturate placenta, any kind of damage in placenta. Fifth one is smoking. Smoking may lead to hypoxemia and compensatory placental hypertrophy. Now comes to discuss about clinical presentation. Here we have mainly triad of placenta previa. First one is vaginal bleeding. In vaginal bleeding, what kind of color that occurred, that is bright red color, often occurs during sleep, and bleeding is always revealed type, visible. It can be easily visible in the genital tract or from the vagina. Second one is abdominal findings. Uterus is mainly soft. And at the last, we will be discussing about the difference between the placenta previa and abruptio placenta as well. So, second clinical
presentation is abdominal finding, that is uterus is soft and non-tenderness, no contraction, relaxed tone होगा, fetal parts are easily felt. And it is the pain is painless, causeless and recurrent. Now come to second topic, that is called abruptio placenta. Abruptio placenta is the separation of placenta of a normal situated placenta from the uterine wall before the delivery of the fetus. So in this case, what would happen? A placenta is separated from its normal position. It can be in a upper uterine segment or in a lower uterine segment, but it is what happened here, premature separation of placenta. It can be a reveal type, it can be a concealed type. So it would happen due to the premature separation of a normal situated placenta, the bleeding may occur and the bleeding may be revealed, and it can be concealed type. In the reveal type, what would happen? The blood is visible from the vaginal orifice, but in the concealed type, blood is trapped behind the placenta, that is retroplacental hematoma, may lead to retroplacenta hematoma. Okay, or it can be a mixed, both type, reveal type as well as concealed type. Now comes to etiological factor, that is called that we have abruption, hypertension, preeclampsia or eclampsia, any kind of trauma, direct abdominal injury or external cephalic version, and sudden decompression, rapid release of amniotic fluid, that is called polyhydramnios. Polyhydramnios is nothing but the increase of amniotic fluid more than 5,000 ml, or delivery of the first twin, 500 ml. Other factors include smoking, cocaine use, folic acid deficiency. Now comes to features of abruption, that is painful dark color bleeding. Here it is painful, but in the placenta previa it is painless. Severe backache or abdominal pain, woody hard uterus. In the placenta previa it is soft and non-tenderness, but in placenta abruptio placenta it is woody hard uterus on palpitation. Uterus tenderness is localized or generalized. Fetal heart sound are often distressed or absent. Unlike previa, shock is concealed. Abruption may be out of proportion to the visible blood loss due to the internal sequestration. Now comes to at the end of the topic, we would discuss the difference between the placenta previa and the abruptio placenta. So first feature is bleeding. In the placenta previa it is painless and bright color. Meanwhile, in abruptio placenta it is painful, dark or mixed. In uterine tone it is soft and relaxed. It is tense, tender and woody. In the presentation, malpresentation common, and in placenta previa and abruptio placenta it is usually normal. Fetal heart, it usually normal in case of placenta previa, but it is distress in abruptio placenta. Now comes to shock, proportional to loss, may be out of proportion. Hope so you have understand about the difference between the placenta previa and abruptio placenta. So we have covered mainly whole topic of APH, what is antepartum hemorrhage, placenta previa, abruptio placenta, and we have even discussed the difference between placenta previa and abruptio placenta. If you have any doubt, you may comment on this topic. Thank you so much.